A country has to grow in all sections: agriculture, economy, health, education, technology. But surprisingly, India is pampering only the corporates. The world is learning lessons from India in how to collect taxes from the poor people, how to suck the blood of the poor people without them knowing the pain. Will anybody charge for the services? But in every month, the bank accounts, now India is going towards a zero balance account. Everybody should have an account. But unfortunately, without the knowledge, every month, service charges are being collected from the poor people. Transport is a service sector. Branch is a service sector, where you don't charge people for the services that you're rendering them. But unfortunately, yesterday when somebody was raising that they should have a branch, I come from Arni Parliament. I have asked our Honorable Finance Minister several times to open a branch because so many people are there and they have to walk 15 kilometers. But this is my request also to the Honorable Finance Minister to open a branch. See, you cannot go on the business. You cannot go on the feasibility of the business, of the branch. But it is a service sector. Because the government always depends on the accounts. The schemes directly go to the beneficiaries. I agree. You don't want the middlemen. I completely agree and endorse. But at the same time, the money is directly put into the account holders' accounts. In that case, how the poor people will go to the bank? How the women, the Narega project, even it is implemented, the money is given, the wages are being rendered into the account. How they will go and encash it? So I humbly request the Honorable Finance Minister to open the branch, to open the ATMs, to open the one-man branch at least in almost all the villages so that this confusion is sorted out. Being our Finance Minister can understand Tamil, I would like to say only one thing. I would quote from Tirukkural. In her opening remark, she said, "Iyattalum, eattalum, kaattalum, kaatha vagutalum valladarasu." That means a government should be competent enough to generate funds. But here, this investment is the norm of the day. Government is very happy in selling all the public sectors. They only issue license and threaten. Apart from that, the government does not believe in earning money and generating funds for the poor people. For example, this house has seen several legislations being passed because of the Mammoth majority. I completely understand. Last session also in Civil Aviation Department, several legislations were passed, only for the benefit of Air India. Imagine during Corona, the first wave, no private aircrafts were willing to offer their services to bring back the migrants, NRIs who are stranded in abroad. But it was only Air India who boldly went abroad and brought our people back to India safely. But today, unfortunately, Air India has been sold. And this is what we are going, every time legislation is passed, only for centralization of powers. It is not a clear definition of this country that is going to improve, put the country in the progressive pathway. This is the real fact India is facing. Moreover, I have no mention in this budget about my Kuteripattu bridge flyover project in my constituency and the railway lines, two railway lines, Dindivanam Tiruvannamalai, Dindivanam Nagari. Those two, there is no mention about these two railway lines also. There is Agriculture University and Silk Park for my constituency. There is no mention. And Defence Corridor. Honorable Finance Minister, then the Defence Minister and the Prime Minister both came to Mamalapuram for opening a defence corridor. But there is no mention. It was only puja and advertisement and celebration. After that, the government has completely forgotten about the defence corridor and which we are facing so much threat from the neighboring countries. Senji Fort, in my constituency, I wanted Senji Fort to be declared as a tourist center. There is no mention. And during Corona, we are all, searching for vaccines. We are importing vaccines. But in Tamil Nadu, there is a place called Chengalpet Vaccine Center,
and it is fully furnished, fully equipped, infrastructure is 100% complete. We are able to give 50 crores vaccine per annum. It is 100% profitable and 100% functional. But government is not at all keen in reviving or giving money, in spite our Honorable Chief Minister and our Rahul ji and Sonia ji also wanted the Chengalpattu vaccine unit to be revived. But this government is mute in this aspect. And Honorable Speaker sir, regarding tolls, this is taking a toll on our life. This toll in the highways compared to Maharashtra, compared to Uttar Pradesh, it is bigger. My Tamil Nadu state is smaller compared to Maharashtra and UP. But more tolls are there in Tamil Nadu. And there is no protocols being followed. There is no ambulance. There is no water services. There is nothing. What has to be what has to be kept in a toll is not kept in toll. And people are made to wait in a big queue. And this government, there is no mention at all. And finally, the airports. I want an airport, international airport, in my RNA constituency, and the government of India has to have a very motherly approach towards allotment of airport in my constituency. And last but not the least, petrol and diesel prices, unbearable, unimaginable, never ever ever in the history of India, freedom, Indian constitution, Indian people have never seen such an increase, irrespective of the decrease in the kacha prices. But still, the government is mute. The corporation can decide on the price of petrol and diesel. The corporations of BPC, IOC, SPC can decide on the LPG. The freight charges is phenomenal, is huge. Every time it fluctuates. People are not, they're not taken into consideration at all. But still we have to pay and bleed. People are bleeding. But unfortunately, government is keeping quiet. But poor farmers, the manufacturers of the agriculture produce, but they are not able to decide on the price. And the government is mute on the MSP, fixation of MSP. Now all these aspects, considering these things, anyway the bill is going to be passed, but I strongly object this supplementary demands and grants. Consider all, whatever my demands are there, consider everything and bring a comprehensive bill, then I would like to pass it. Thank you very much, sir. Srimati Aparajita Sarangi. Thank you. I rise in this August House to extend my support to the second batch of supplementary demand for grants for the year 21-22. As we are aware that the Ministry of Finance had laid this proposal on the table on 3rd of December 21. We are aware of the fact that under very difficult circumstances, the budget of 21-22 had been formulated. We were going through the worst times of Corona, and this particular budget, if I say, has played a vital role in ensuring the revival of the economy. I don't think it would be exaggeration. We need to accept it, that this particular budget has contributed to the revival of the economy. One of our friends just mentioned about 8.4% growth in the second quarter. I think that explains whatever I have been saying. Sir, this budget of 21-22 embodies in itself three elements we need to acknowledge, we need to appreciate. Number one, hope. Number two, vigor. And number three, confidence. Now, it embodies hope, which we carried among ourselves during the toughest times. All of us worked together. As Madam Sule rightly said, the central government and all the state governments under the leadership of the Prime Minister and the respective chief ministers have worked very closely combating combating COVID-19. As far as the element of vigor is concerned, this was embodied in all the youth. In fact, they have been filled with abundant promises and unsuppressed thirst to perform and succeed. This is very much visible, and I think the budget has been trying to help this segment of the population. Confidence, the element of confidence reflected by the budget, there is the confidence that the economy will revive and reset. Sir, as we know, this particular
supplementary demand for grants second batch includes 69 grants and 2 appropriation, and approval of the House is sought for rupees 3,73,000 crore. Now, sir, as I rise to speak, as I would be talking about certain departments, the proposals they have placed before the House, I would definitely like to recall the statement made by Honorable Prime Minister Modi. He had rightly said, I would appreciate the House to kindly understand the spirit behind the statement made by the Honorable Prime Minister. Some time back he had said, this country is not made by politicians, kings and governments. This country is made by farmers, laborers, our mothers and sisters and youth. And therefore, this particular budget, the second batch of supplementary demand for grants, reflects the spirit of the statement of Honorable Prime Minister. We may not like it, but we must accept it. We must have the humility to accept it. Sir, I have been listening to all my esteemed colleagues from the right side, and all of them have been talking about MGNREGS. I would start with the Ministry of Rural Development. The Department of Rural Development is one of the departments under the Ministry of Rural Development. From 2013 to 2018, I had the opportunity of serving as the Joint Secretary handling MGNREGS, the biggest anti-poverty program of the world. Sir, this supplementary demand for grants talks of 47,039 crore rupees for the Ministry of Rural Development, which includes rupees 25,000 crore for Manrega, which includes 2,000 crore under Manrega for asset creation. Now, I think it's very important to understand the budget of MGNREGS. MGNREGS, backed by an act of 2005, it's very important to understand the way the budget is formulated. I would request the House not to compare apples with oranges. Apples must be compared with apples, and oranges must be compared with oranges only. Sir, when 21-22 budget was brought by the Honorable Finance Minister in February, she had brought in 73,000 crore rupees for MGNREGS, which was 18% more than the BE of 2020-21. B compared to B, 18% above. Now, there was an apprehension in the minds of the friends on the right side. They had said at that point of time, and today also some of the friends reiterated, that 34% less this time compared to last year. Now, what they are doing is, they are comparing the BE of 21-22 with the RE of 2021, which is not right. In fact, today, we must thank Honorable Prime Minister. In May 2014, when Prime Minister had come, he had taken the charge. One direction that had been given to the Ministry of Rural Development, where I was working as the Joint Secretary handling the program, was transform Manrega, focus on asset creation. The direction was to focus on water conservation, water management, and ensuring water availability for all, and thereafter we started. Today in the morning, I talked to the officials of the Department of Rural Development because I knew these things would come up today. Questions would be raised, doubts would be actually placed on the table today regarding Manrega. I'm extremely delighted to inform the House that despite your apprehension that 34% less BE of this year compared to the RE of last year, we have done exceedingly well. It's very easy to formulate schemes and programs. A good governance model is one which actually ensures that the schemes and programs are implemented properly. Whatever the resources that were available were put to right use. And today I'm delighted to tell you, I don't have to read the papers also. 60 lakh assets have been created till date this financial year, not a mean achievement. And 256 crore person days have been generated. And one more thing, I wish Mr. Shashi Tharoor, the erudite scholar, would have been here. Unfortunately, he's not there. He didn't listen to us. 99.62% of the people who had requested for jobs, or rather requested for wages,
under Manrega, under employment under Manrega, were offered employment by the whole setup. All the states helped by the central government. 99.62%, please remember. So please don't say that whatever demand was there, it could not be met. This is wrong. Please go to the website of Manrega. I'm extremely delighted to tell you, rather very happy to tell you, proud to tell you that MGNREGS has a wonderful website. It's a real-time basis. You can see everything there. And it's not the central government handling the website. It's real-time. It's coming from below, from all the states. So the fund allocation, 25,000 crore. And interestingly, as per the direction of the PM Modi, there has been very good focus on asset creation. 2,000 crore rupees have been earmarked for asset creation. I think we need to compliment the efforts of the government, commend the endeavor of the Prime Minister. The fund allocation now will definitely benefit the implementation and contribute to the growth of the scheme. So I come to the next ministry, the Ministry of Jal Shakti. I'm reminded of the statement of Nishikant Dubeji. He mentioned, and I think some of our friends from that side also mentioned, sir, apart from the Namami Gange plan, we are also talking of river linking projects. River linking projects, Cabinet approved the Ken Betwa river linking project in Bundelkhand area, water-starved area, for 44,606 crore rupees. This is not a mean achievement. Sir, the union budget of 21-22, the union budget, I'm not talking of the supplementary grant which has been placed now, the union budget of this current financial year envisioned universal water supply in 4,378 urban local bodies with 2.86 crore tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrut cities. So this is, I think, the focus of the government, the focus of the Prime Minister. He has been talking to all of us regarding the need to focus on water availability, water conservation, and water management. Sir, the Ministry of Jal Shakti has placed demand for 8786.17 crore. This has to be approved by this August House. I would request for that. So farmers, agriculture, I think we have been toying with this idea. I'm privileged to be the spokesperson of my party, and every evening on various TV channels, I meet all our friends from the right side. Many apprehensions, many doubts about the intention of the government as far as farming is concerned, as far as the interest of the farmers is concerned. Sir, छोटा किसान बने देश किसान, और मुझे लगता है मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार किसानों के कल्याण पर केंद्रित है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। Sir, there has been record procurement at MSP of paddy and wheat this year. Nobody can deny that fact, number one. Number two, 28 crore soil health cards have been distributed and rupees 1.62 lakh crore have been credited through direct benefit transfer methodology to the accounts of 10 crore farmers. And sir, 1 lakh crore have been earmarked for the agriculture infrastructure, which is not a mean achievement. I need some time. Sir, the fertilizer plants that had been closed for years together, I'll mention one plant, I think we are all aware of that. The Gorakhpur plant, Honorable Prime Minister had gone to Gorakhpur and he actually inaugurated that plant. Rather, he announced the revival of that plant, which had been closed for 30 years, the Gorakhpur fertilizer plant, at a cost of rupees 8600 crore. It's a big achievement, and this also reflects the focus of the government on agriculture and allied works. So the Department of Fertilizers, in fact, has placed the demand to the tune of rupees 58,430 crore. This includes rupees 15,000 crore for urea subsidy scheme, rupees 26,602.66 crore for indigenous P&K subsidy, rupees 16,827.34 crore for imported P&K subsidy.
Sir, this particular government has been talking of 100% neem-coated urea, and the work has started. And let me tell you with a lot of confidence, and that is what we have been seeing on the ground. We are all in Lok Sabha connected very much with the ground. Sir, the illegal usage of urea, the diversion of urea has been stopped because of the Prime Minister's focus on ensuring 100% neem-coated urea. So the Ministry of Agriculture and Family Welfare has placed the demand for 2,222.03 crore, and this includes rupees 241 crore for the northeastern region. I would request this August House to kindly extend your support. So the Ministry of Civil Aviation, in fact, everybody has been talking about the disinvestment, talking about the Air India. We seek approval for 66,820.05 crore. I think the matter has been debated enough. I would not like to dwell on that. This will be utilized for equity infusion in Air India Assets Holding Company for repayment of past government guaranteed borrowing and past dues liabilities of Air India. I would like to quote Honorable Prime Minister here. Honorable Prime Minister had rightly said a couple of weeks back that the disinvestment of Air India is the biggest example of public-private collaboration to deliver quality and improve services for Indians. Sir, two words stand out: to deliver quality and improve services for Indians. I think the good governance model will definitely talk of this. Sir, Ministry of Defense, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, देश की सुरक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. The government here has placed a demand for rupees 9,790.18 crore. This involves rupees 5,000 crore revenue expenditure for defense services, rupees 3,790.18 crore for capital outlay, and rupees 1,000 crore for civil defense. So the Ministry of Railways, I think we are aware of the importance of railways. So Indian Railways is certainly not only a medium to connect distances. I quote Prime Minister Modi again. Indian Railways is not only a medium to connect distances, but it is also becoming an important medium to connect the country's culture, tourism, and pilgrimage. सिर्फ दूरियों को रेल कम नहीं करता है, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारे पर्यटन स्थलों को जोड़ता है. इसलिए रेलवेज का बहुत महत्व है. The present government under the leadership of Prime Minister Modi is talking of a national rail plan so that we are future ready. By 2030, we are absolutely ready, and there is focus on that. आपने कल रात के कुछ तस्वीर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में, और आज खबर कागज में भी, अखबारों में घूम रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे कल रात. उन्होंने निरीक्षण किया, देखना चाहते थे कि काशी का रेलवे स्टेशन साफ है या नहीं, सुसंगठित है या नहीं, सुंदर है या नहीं. तो मुझे लगता है अगर देश के प्रधानमंत्री मध्यरात्रि में रेल स्टेशन पर घूमे तो देश के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है. अच्छा लगे या न लगे, लेकिन जो सच है उसे हमें मानना पड़ेगा. और जहां तक गुड गवर्नेंस मॉडल का सवाल है, हम सुशासन की बात करते हैं. दिसंबर 25 आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनिवर्सरी है, हमें पता है, और उसे हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं. जहां तक सुशासन का सवाल है तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और सुशासन के तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं. मुझे लगता है हम सब हमें सबको इसका स्वागत करना चाहिए. We need to accept this and congratulate and appreciate.
Sir, as I told you, not just formulation of schemes, but the implementation of the schemes is extremely important, and that is why the PM National Gati Shakti program has come. Rupees 100 lakh crore have been earmarked for that matter, and I think we need to appreciate this endeavor of the government. Sir, with Janta in its heart, with Atmanirbhar Bharat as the vision, under the leadership of Prime Minister Modi, we will all, the government, will continue to walk the talk, deliver, and make dreams come true. Now with this, I would very humbly request all the esteemed members of the House to kindly extend support to the second batch of supplementary demand for grants for rupees 3.73 lakh crore. Thank you so much. I request the other speakers to keep in mind the time allotted for your respective parties. So the next speaker is Shri Ritesh Pandey ji. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात को यहाँ रखने का अवसर दिया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने देश के बढ़ते स्टॉक मार्केट और भ्रामक सरकारी नीतियों का हवाला देते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक दिव्य स्वप्न हमारे सामने रखने का काम किया है, लेकिन सच्चाई माननीय सभापति महोदय इससे बहुत दूर है, और मैं आपके माध्यम से सरकार को इस दिव्य स्वप्न से ज़रूर जगाना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ सरकार ने अपना ध्यान यूनिकॉर्न्स पर केंद्रित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, वहीं नोटबंदी तथा जीएसटी के खराब क्रियान्वयन से और कोविड महामारी ने देश के छोटे और मध्यम वर्ग उद्योगों को नष्ट कर दिया है। यह छोटी और मध्यम वर्ग उद्योग हमारे देश के रोजगार दाता थे। देश की कुल जनसंख्या का 70% व्यक्ति, कुल जनसंख्या के 70% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और ये 70% लोग देश की आर्थिक या देश की इनकम लेवल में 46% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। वास्तविक वेतन, जिसको रियल वेजेस कहा जाता है, जिससे आम व्यक्ति की खरीदने की क्षमता को आंका जाता है, उसको अगर हम देखें, वो पूरी तरह से या तो स्थिर है और या तो घट चुकी है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उपभोग में भी गिरावट आने का काम हुआ है। महामारी के पहले जनवरी 2020 में ही सरकारी संस्था एनएसओ द्वारा सर्वे में यह स्थापित कर दिया गया था कि भारत में उपभोग उसी समय 10% की गिरावट आ चुकी थी। जहां ग्रामीणों की आमदनी गिरी, उनकी खरीदने की क्षमता घटी, वहीं लोगों की नौकरियों को मिलने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर देना पड़ा। इसी के साथ साथ चप्पल से लेकर चपाती तक में ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी देखने का काम किया गया, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था स्वाहा हो गई है। अब इसी बीच छाती पीटते हुए, थाली बजाते हुए एक हमारी अर्थव्यवस्था को और खत्म करने के लिए एक बहुत ही कठोर लॉकडाउन लागू किया गया। उस समय लाखों प्रवासी मजदूरों को एक बहुत ही घातक और बहुत ही कठिन पदयात्रा पर वापस अपने घरों की तरफ भेजने का काम किया गया। और जब वो अपने ग्रामीण इलाके में पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे, तो वहां उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा? वहां उन लोगों को वापस पहुंचते ही महंगी खाद, महंगा डीजल और गिरती हुई कृषि आमदनी का सामना करना पड़ा, जिससे ग्रामीण भारत में गरीबी और व्यापक तरीके से फैलने का काम हुआ। इसी वजह से हमारे सामने मनरेगा की डिमांड में एक बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये मान्यवर, आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी फिर जो मनरेगा डिमांड में पैसा दिया जा रहा है, ये हमारी सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करता है। लेकिन क्या सरकार इससे कुछ सीखती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सन 2020-21 में बजट में केंद्र सरकार ने 61,500 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया था, जो कि 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था। 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था, जिसमें महामारी हमने झेली थी। जाहिर सी बात है कि यह आवंटन कम पड़ गया और सरकार को 40,000 करोड़ रुपया इस सदन से दोबारा मांगना पड़ा। इस साल भी जब महामारी और मंदी का प्रकोप
ग्रामीण इलाकों में व्यापक था, फैला हुआ था और उसने अपना तांडव पूरी तरह से दिखाया, तभी भी जो है इस सरकार ने मनरेगा के आवंटन में मात्र 1.8% की वृद्धि करने का काम किया, जो कि कोविड की दूसरी लहर के बाद भी इतनी कम वृद्धि जो है ये कहीं ना कहीं सरकार की एक विफलता को दिखाने का काम करता है। इनकी दूरगामी सोच में जो पर्दा लगा हुआ है उसको हमारे सामने लाने का काम करता है। इसी कारण अक्टूबर के महीने में तमाम राज्यों ने मनरेगा के फंड्स को खत्म होने की गुहार लगाना शुरू कर दिया और आज फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि उसको फिर बढ़ाने की बात की जा रही है। सरकार को एक दूरगामी सोच के तहत इस चीज को पहले ही सोचना चाहिए था। मनरेगा का जो इस साल आवंटन किया गया है ये 2015 और 16 के वास्तविक आवंटन से कम है। वास्तविक आवंटन से मेरा मतलब यह है कि इन्होंने इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट में लिया जाए तो उससे ये कम होने का काम करता है। और अब और ये 2015 में जो है जब ये हुआ था, जब नोटबंदी जैसी घातक नीतियां हमारे सामने आई थी, और अगर हम नोटबंदी की ही बात करें माननीय अध्यक्ष जी, तो हमारे सामने 17 लाख रुपए का नकदी जो है नोटबंदी के समय था और आज की तारीख में आरबीआई ने फिर से अपने आंकड़े दिए हैं और उसमें लगभग 30 लाख करोड़ की नकदी हमारे जो है अर्थव्यवस्था में आने का काम हुआ है। मेरे ख्याल से जो हमारे लाखों लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग थे उनका लाइन में लगना और अपनी दुकानों को बंद कर देना, अपने बिजनेसेस को बंद कर देना, वो व्यर्थ ही हो गया मान्यवर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ना तो सिर्फ काला धन वापस आया और ना ही किसी को 15-15 लाख रुपया उनके खातों में मिलने का काम हुआ। अब मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े जिनका हमारे सामने जो आने का काम होता है, इसका आम जनता के जीवन से क्या मतलब होता है। दाल, तेल, गैस की बढ़ती कीमतें, गिरती आमदनी और नौकरियों के अभाव से गरीबी और व्यापक होती चली जा रही है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि 2014 से निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के आंकड़ों में डरावनी। I have 10 minutes, sir. I have 10 minutes. No, sir, I have 10 minutes. That's what he told me. He said I have 10 minutes. So, शिक्षा के आंकड़ों में डरावनी प्रवृत्ति देखने को मिली है। इस सरकार को रैंकिंग का बड़ा शौक है मान्यवर। मैं आपके माध्यम से रैंकिंग जरूर एक रैंकिंग रखना चाहूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। मान्यवर उसमें भारत की रैंकिंग 101 पायदान पर है और हम जो सबसे पीछे देश है, हमसे पीछे मात्र 16 और देश हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी देश भी हमसे इस रैंकिंग में आगे हैं मान्यवर। भारत में भुखमरी की कगार को वैश्विक रूप में हमें एक गंभीर बीमारी से हम झेलने का काम करते हैं। ये पूरी दुनिया मान रही है कि भारत में यह स्थिति पैदा हुई है। भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, 60% महिलाएं एनीमिक हैं, 55% बच्चे निर्बल और नाटे कद के हैं। लेकिन फिर भी यह सरकार इस सदन से जो पोषण का धन मिला हुआ है उसको खर्च करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज भी उत्तर प्रदेश में मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील का पैसा है वो प्रतिदिन प्रति बच्चे पर मात्र 5 रुपया आवंटित किया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदन से पूछना चाहता हूं कि 5 रुपए में कौन सा पौष्टिक भोजन इन बच्चों को मिल रहा होगा। आप लोग जरा इस पे गौर करने का काम करिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों ने बहुत ही बड़ा जो है अपना स्कूल का वर्ष खोने का काम किया है और यदि सरकार उसके लिए कोई नीति जल्दी नहीं लेके आती है तो उनका 1 साल का पूरा शिक्षा का कार्यकाल पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। तो अगर ग्रामीण भारत की यह स्थिति है और वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है मान्यवर, तो आखिर फायदा किसको हुआ है, इस पर भी यह प्रश्न उठता है। मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास भारत की आधी जनसंख्या के पास जितना धन है उतना मात्र 1% लोगों के पास है। लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे अमीर आदमी ने 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम किया। भारत में पिछले 7 साल में जो भी आर्थिक बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है वो बिना रोजगार सृजित किए हुए मिली है, यानी कि कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, क्योंकि चंद पूंजीपति लोगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने का काम ये सरकार करने का काम करती है। मान्यवर, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, सिर्फ उन्हीं सेक्टरों के लिए नीतियां बन रही हैं जिसमें रोजगार सृजित नहीं होते। कौन से हैं ये सेक्टर? बस 2 मिनट्स में, आई एम कंक्लूडिंग इन 2 मिनट्स। कौन से हैं ये सेक्टर? ये सेक्टर टेलीकॉम और ये सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट से हम बाहर रह करके जो हमारा टेक्सटाइल जैसा सेक्टर है जिसमें अंदर एक भारी रूप से रोजगार सृजित होने का काम होता है, उस सेक्टर में मान्यवर
हम लोगों ने अपना बिजनेस बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम को खोलने का काम किया है। दरअसल बात यह है कि सरकार की सारी नीतियां एक ही कार्यालय और एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जी हजूरों की फहरिस्त लगी हुई है, और जिसकी वजह से हम और आप चाहे जो कुछ यहां पे बोले वो भैंस के आगे बीन बजाने का काम करना है। कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार विभाजनकारी और पूंजीवादी राजनीति को प्राथमिकता देकर दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ छलावा करने का काम कर रही है। जहां अयोध्या और काशी के नाम पर ढिंढोरा पीट करके और हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, वही समाज में जातिवाद और आर्थिक असमानता की खाई को कम करने के लिए इस सरकार ने एक भी ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया है। ऐसी राजनीति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान्यवर, आपने कभी सोचने का काम किया है? आप कब तक नफरत की नींव पर अपने चुनाव को लड़ने का काम करेंगे? देश के पूंजीपतियों को प्लीज कंक्लूड। देश के पूंजीपतियों के हाथों में देश को गिरवी रखकर आप कहां पर जाएंगे? सबका साथ और सबका विकास कब होगा? अच्छे दिन कब आएंगे? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।